Hopefully the desktop is visible to you. You can see the lecture slides, and also recording has already been started. Please confirm that my voice is clear. Yes, sir. In the last two lectures, we have started about the interest rate, how to calculate interest, and in the last lecture, we have covered about the economic equivalence. Today, we are going to cover a small lecture that is about the nominal and effective interest rate, and this lecture is all about nominal and effective interest rate. We will find the difference and also see that why it is the both are different. We will solve a problem as well to see why it happened that these two are different. Nominal and effective interest rate. Many financial transactions require that interest be compounded more often than once a year, semi-annual, quarterly, monthly, daily. In such situations, there are two expressions for the interest rate. हमने लास्ट टाइम भी देखा कि ज़रूरी नहीं कि एक ही बार कंपाउंडिंग हो, बल्कि एक साल में एक से ज़्यादा बार जो है वो कंपाउंडिंग दैट कैन बी डन. So in that case, we have the expression of interest rate like the as it is mentioned. The nominal interest rate R is expressed on an annual basis. This is the rate that is normally quoted when describing an interest bearing transaction. So one type is nominal interest rate that is expressed by R, and the effective interest rate I is the rate that corresponds to the actual interest period. The effective interest rate is obtained by dividing the nominal interest rate by M, the number of interest periods per year. So M is number of interest periods per year. How we can know that what are the number of interest periods, we will see in the example. But this is the formula to convert the effective interest rate to see the effective interest rate from the nominal interest rate R. I is equals to R over M, where R is the nominal interest rate. So this is the formula to convert nominal interest rate into effective interest rate. You can note down the formula so that it becomes easier that what is I and what is R. R is nominal interest rate and I is effective interest rate. Now nominal interest rate, the term nominal means in the name only. In other words, it is not the real interest rate. I will prove that this is not the real interest rate by solving a problem. We need a way to convert a nominal interest rate to true effective interest rate that will actually apply. So if it is not real interest rate, then what would be the real interest rate, or what will be the interest rate that is actually we have applied? Mathematically, we can define the nominal interest rate R as R is equals to effective interest rate per period multiplied by number of periods. This is again the same formula, it is just converted. So the effective interest rate can be computed as effective interest rate per period is equals to R over number of interest periods. So it is again I is equals to R over M. Now what is effective interest rate? An effective interest rate is a true periodic interest rate that applies for a stated period of time. Now it is conventional to use a year as the standard period of time. So we would like to be able to convert a nominal interest rate to an effective annual interest rate. So this is the third term that I have used here. The first one is effective interest rate, nominal interest rate, and then effective annual interest rate. Why we are interested to know the effective annual interest rate? Because the nominal interest rate that is usually expressed is on an annual basis, while the effective interest rate is on per period basis.
while there are expressions and we are going to have the comparison, so the comparison would be on the annual basis. So we will convert the nominal interest rate to an effective annual interest rate. Effective annual interest rate. Now 1.5% per month effective interest rate is same as 18% nominal interest rate per year. It is written per year is in red. The reason is that nominal interest rate is usually on a yearly basis. So if it is written per year, then it's okay. But if it is not written per year, then again the understanding is that the nominal interest rate is on yearly basis or per year. 1% per week effective interest rate. Anyone who can tell me that what is the nominal interest rate in this case? Any student? If 1.5% per month effective interest rate, then the nominal interest rate is we have multiplied with the number of interest periods, that are 12, because there are 12 months in an year. So what would be the effective interest rate in this scenario if we have 1% per week? And you can 1% into 4 into 12. 4 into 12. Okay. Usually we take 52 weeks in a year. So that is the understanding, but your it is the correct that you are taking 4 weeks and there are 12 months, it becomes 48. But if we for more accurate for accuracy, we usually take 52 weeks in a year. Is the same as 52 multiplied by 1%, 52% nominal interest rate per year. It means we are just multiplying with the interest periods and we are getting with the effective interest rate, and we are getting the nominal interest rate. Now solve this problem and tell me that what is the nominal and what are the effective interest rates. You can solve and then you can upload. Don't tell me on the on this Teams. Students are required to solve this. अटेम्प्ट करें, ये क्विज नहीं है, ये आप की सिर्फ अटेम्प्ट है, ताकि आपको यहीं पे क्लैरिटी हो जाए कि क्या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होगा और क्या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा. ये किसी ने सॉल्व कर लिए? Anyone who has solved this problem? जी चलें, वैसे ही बता दें कि क्या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होगा और इफेक्टिव क्या होगा. एनी स्टूडेंट?
in this problem, what is the nominal interest rate and what is the effective interest rate? नॉमिनल पर ईयर बेसिस पे होता है, इफेक्टिव जो है पर पीरियड बेसिस पे होता है। So what is per year basis interest on yearly basis? नॉमिनल 6 होगा जी, आंसर इस पे लिखा हुआ है। नॉमिनल 6 और इफेक्टिव 1.5। जी जरा थोड़ा सा 1 मिनट जी दोबारा बोलें। नॉमिनल 6 और इफेक्टिव 1.5। Okay, that's correct. Nominal is you can see the nominal interest rate is R is equals to 6%. कैसे 6% हमने इसको कहा, क्योंकि जो ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट रेट है दैट इज 6% पर ईयर। Now compounded quarterly means how many quarters are in an year? There are 4 quarters in an year. 4 से डिवाइड कर देंगे उसको। ठीक है, सिंस देयर आर 4 इंटरेस्ट पीरियड्स पर ईयर द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज I इज इक्वल टू R ओवर M। जो फार्मूला अभी हमने स्टडी किया है वही फार्मूला अप्लाई कर दिया है, I इज इक्वल टू R ओवर M। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल गया कि 1.5% पर क्वार्टर दैट इज द क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, एंड दिस इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। Now comparison of nominal and effective interest rate. Usually we express interest rate on annual basis followed by a compounding period if different from 1 year in length. देखें यूजली ये यहाँ पे जो एक इकोनॉमिक्स में हम इंटरेस्ट रेट एक्सप्रेस करते हैं वो एनुअल बेसिस पे होते हैं एंड फॉलोड बाय कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा। ये इस एग्जांपल में 6% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इस तरह से यूजली इंटरेस्ट की स्टेटमेंट्स होती हैं। नाउ फॉर एग्जांपल इफ द इंटरेस्ट रेट इज 6% पर इंटरेस्ट पीरियड एंड द इंटरेस्ट पीरियड इज 6 months, it is customary to speak of this rate as 12% compounded semi-annual। तो हम ये सारा एक्सप्रेस नहीं करते कि 6% पर इंटरेस्ट पीरियड एंड इंटरेस्ट पीरियड इज 6 months। Usually we express as 12% compounded semi-annual. So here the annual rate of interest is known as the nominal rate, 12% in this case, but the actual annual rate on the principal is not 12% but something greater because compounding occurred twice during the year. This is what we are going to prove. कि लिखने में तो इसको समझ लें कि लिखने में तो ये 12% आएगा, लेकिन जब हम इसको एक्चुअल में अप्लाई करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ये 12% नहीं है इफेक्टिव एनुअल। ठीक है, जो एक्चुअल में अप्लाई हुआ है या जिसके अकॉर्डिंगली हमने पेमेंट की है वो अमाउंट डिफरेंट है, वो 12% के लिहाज से नहीं है। ठीक है, consequently the frequency at which the nominal interest rate is compounded each year can have a pronounced effect on the dollar amount of total interest earned. ये एक्सप्रेस किया गया है कि अगर हम जो हमारा इंटरेस्ट पीरियड है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर देते हैं, यानी इंटरेस्ट पीरियड या टाइम को हम कम कर देते हैं जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो उसके इफ़ेक्ट होता है किस पे, जो हम टोटल प्रॉफिट अर्न करते हैं या जिसको इंटरेस्ट कहते हैं। ये भी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो साथ ही इस बात की डिस्कशन आ जाएगी। For instance, consider a principal amount of $1,000 to be invested for 1 year at 12% compounded semi-annual.
a principal amount of $1,000 to be invested for 1 year at 12% compounded semi-annual। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितना है? जी, दैट इज 12%। देखिए नॉमिनल के साथ हम पर ईयर लिख दें या ना लिखें, वो अंडरस्टैंडिंग हमारी यही होगी। यहाँ पे हम ये मैं लिख भी सकते हैं 12% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअल। यूजली हम नॉमिनल के साथ फिर फर्दर इसको ऐड नहीं करते पर ईयर को। 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअल, काइंडली इसको अब आप सॉल्व करें। सेमी एनुअल का क्या मतलब है कि कितने गैप के बाद जो है वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, काइंडली ये बताएं कि कितने मंथ्स के बाद हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। 6 मंथ्स की। तो काइंडली करके बताएं कि $1,000 पे फर्स्ट 6 मंथ्स में कितना इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट कितनी बनेगी। आपके पास ये डाटा यहाँ पे गिवन है। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? पहले 120 आपने बताया, फिर 60 बताया। आई डोंट नो आपने या किसी और स्टूडेंट ने। तो श्योर करें कि फर्स्ट 6 मंथ्स में कितना 60 होगा। किस फॉर्मूले से किया है? सर I इज इक्वल टू R ओवर M, फिर परसेंटेज जो आई उसको 1000 से मल्टीप्लाई। अच्छा अच्छा, हम इसके लिए जो अपना फॉर्मूला है कैपिटल आई इज इक्वल टू कैपिटल पी स्मॉल एंड स्मॉल आई, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो कैपिटल आई इज इक्वल टू कैपिटल पी स्मॉल एंड स्मॉल आई। यहाँ पे स्मॉल एन क्या होगा? दैट इज हाफ ईयर, 1/2 हो जाएगा। कैपिटल पी इज 1000, स्मॉल एन इज 1/2, स्मॉल आई इज 12%। ठीक है, दैट इज $60। अच्छा, अब अगले 6 मंथ्स में कैलकुलेट करें कि कितना इंटरेस्ट बनेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में। जी, सेकंड 6 मंथ्स में हमारा कितना इंटरेस्ट बनेगा? 63.6 सर। 63 पॉइंट। अच्छा, ये कैसे आया इसको जरा आप देख लें कि फर्स्ट 6 मंथ्स में जो इंटरेस्ट अर्न किया दैट बिकम द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ सेकंड 6 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि हमारी कंपाउंडिंग हो रही है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि हम इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं कर रहे। जब हम इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे तो वो सेकंड 6 मंथ्स की प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट बन जाएगा। सो इन द बिगनिंग ऑफ सेकंड 6 मंथ्स वी हैव 1000 प्लस 60, 1060, दैट इज द अमाउंट जो कि सेकंड 6 मंथ्स की बिगनिंग में हमारे पास अवेलेबल होगी। इसका क्या मतलब है कि फिर दोबारा हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट
63.60. PNI का जब फॉर्मूला यूज करेंगे we will get $63.60. अब अगर इन दोनों अमाउंट्स को हम ऐड कर लें 60 प्लस 63.60 तो ये कितना बनेगा? That become 123.60. Is that correct? कि हमारे पास जो इंटरेस्ट की अमाउंट बनी है दैट इज $123.60. That is the total amount of interest in an year. जी ये क्लियर हो गया कि ये 123.60 कैसे आया? Yes, sir. Finally, the effective annual interest rate for the entire year is that is 123.60 divided by 1000 multiplied by 100. ये हमने सिंपल तरीके से परसेंटेज इसकी कैलकुलेट की है कि अगर हमारे पास इतना हमने इंटरेस्ट पे किया है आउट ऑफ हमने 1000 हमारे पास था तो परसेंटेज में हमने कितना इंटरेस्ट फिर पे किया है? That is 12.36%. So the effective annual interest rate is 12.36%. जबकि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा था कि 12% इंटरेस्ट है और हमने जब इसकी एक्चुअल में कैलकुलेशन की तो पता चला कि इट्स 12.36%. ये इसमें 0.36% का क्यों एडिशन हुआ है? व्हाई इट इज मोर देन 12%? इंटरेस्ट जमा नहीं था करवाया. एग्जैक्टली हमने क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की थी वो सेकंड 6 मंथ्स की प्रिंसिपल का पार्ट बन गया जिसकी वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट है वो हमारा इंक्रीज हो गया. यानी जब हमने उसको दोबारा जो अमाउंट इंटरेस्ट के फॉर्म में पे की उसको हमने कन्वर्ट करके देखा कि ये कितने बनते हैं परसेंटेज में तो वी हैव कैलकुलेटेड दैट इट्स 12.36%. सो this is the effective annual interest rate. Effective annual interest rate. अब अगर हम देखें कि 12% वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट था, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा किस तरह निकला? R/M से हम निकाल लेंगे और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे इफेक्टिव एनुअल आया दैट इज 12.36%. सो दैट इज बिकॉज के हमारी कंपाउंडिंग हो रही है लेकिन जो स्टेटमेंट है वो लिखने में वही आएगी जो स्टार्ट में थी. उस स्टेटमेंट को दोबारा देख लें. दैट इज 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअल या सेमी एनुअली. ठीक है लिखने में ये ऐसे ही आएगा लेकिन एक्चुअल में जब इसका इफेक्ट हम देखेंगे तो वो 12.36% होगा और उसकी रीजन हमने देख ली कि कंपाउंडिंग की वजह से ऐसा हो रहा है. So that's all about effective interest rate and nominal interest rate and effective annual interest rate. If you have any question or query, you can ask. Okay, you will have quiz at 3:10.
You can practice that quiz के lectures मैंने आपको बता दिए हैं, lecture number 4, 5, 6. Lecture number 4, 5 and 6. Tell other students to join the class so that they can also attempt the quiz. Quiz will be on LMS. Quiz will be on LMS.